यस प्लीज, प्लीज स्टार्ट। और मैं तो चाहूंगा कि इसके शेड्यूल्स पहले पढ़ लो आप। एक्ट तो बेसिकली आपने पढ़ ही लिया। 7 जनवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव डेट है 7 जनवरी 2009, है ना? ये याद रख लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं। जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल शीतल जी, कोऑपरेटिव। शीतल जी को उस हिसाब से करने दीजिए एक बारी। हाँ टीचर जी। जी। अच्छा, शीतल आप जी, कर लो, कोई बात नहीं, आप करो। क्योंकि क्या है ये इन्होंने अभी स्क्रॉल नीचे नहीं किया ना। अच्छा, सर एक्चुअली यहाँ यहाँ पे मुझे भी ऐसा ऐसा हो रहा है कि मेरे ब्लैंक स्क्रीन है, बाकी नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता सर है। इसमें एक्चुअली इन्होंने स्क्रीन भले ही शेयर कर दी है, सबके पास एक्ट खुला हुआ है, अपने अपना भी देख सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक क्योंकि है, ओके मैं तो अपना ही खोल लिया था फिर। ओके ओके ओके। अगर आप बोलते हो कि शेड्यूल देखने का। नहीं, एक्चुअली नहीं वो कोई। क्या है ना, वो स्क्रीन स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन रहती है ना साथ में, तो कनेक्टिंग बेटर रहता है। नहीं हो रही दैट्स स्क्रीन। वाई। एक बार मैं ट्राई सर करूँ, मुझे तो एक बार मेरा आप स्टॉप स्क्रीन शेयर ब्लैंक करना। दिख रहा है। सर मेरा एक स्क्रीन ब्लैंक है। आप तो ऐसा हो ब्लैंक, रहा है। तो वही एक मुझे एक लगा एक मेरा बार भी आप ब्लैंक स्टॉप था। शेयर करना शीतल जी। ओके सर। मैं ट्राई करता हूँ। किया। मैं ट्राई करता हूँ एक प्लीज बार। सर। यस सर। एक मिनट। मेरे पास डाउनलोड में पड़ा होगा ये। अगर मतलब वी कैन ओपन फ्रॉम आवर ओन उसमें से। मैं तो शेड्यूल पढ़ देती हूँ या तो। पर वो सिंक नहीं रहेगा। हाँ। आप पढ़ती जाओगी और आप स्क्रीन में अपना स्क्रॉल नहीं, कर। आप अपना डेस्कटॉप पे खोल सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ। अरे एक हाँ, मिनट रुक लास्ट जाओ ऑप्शन में वी मैडम, कैन रुक डू जाओ सो। एक मिनट रुको। देखो सबको समझ में आना चाहिए ना। सर बात मैं, पढ़ने की नहीं है, बात ये है पढ़ने, आप पढ़ रहे हो कहीं, वो पढ़ रहे हैं कहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं ना। एक मिनट मैं एक बार शेयर करता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या। अभी देखिए मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको। यस सर। आ रही है, ठीक है। सर तो लास्ट शेड्यूल पे ले जाओ इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। अब देखो ये मूव भी हो रही है ना। यस सर। ठीक है, ये सेक्शंस है। ये सेक्शंस के बाद में फिर आपके शेड्यूल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है। फोर्थ शेड्यूल सेक्शन तो 57। 7 जनवरी आ गया। तो ये तो बेसिकली हमने पढ़ ही लिया मोटा मोटा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार शेड्यूल पढ़ने जरूरी है। तो मेरे वाले में स्क्रीन मूव हो रही है, आप में नहीं हो रही, ऐसा कैसे? डाउनलोड किया होगा आपने भी, डाउनलोड करके ही किया होगा। यस सर। ये देखो ना, फॉरेन एलएलपी के बारे में भी है, हाँ। फॉरेन एलएलपी पे कई बार पूछ लेता है वो। कन्वर्सर में शुड आई रीड कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। एक मिनट त्रिशा, ये स्क्रीन पे अभी नहीं रिफ्लेक्ट हो। एक मिनट, कौन सा सेक्शन देख रहे हो मैडम आप? सर शेड्यूल 4 कन्वर्जन ऑफ हाँ अनलिस्टेड ठीक है पब्लिक। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार मैं शेड्यूल 4 खोल देता हूँ। ये फर्स्ट शेड्यूल आ गया, थर्ड शेड्यूल, और ये है फोर्थ शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? ठीक है जी, हाँ एक मिनट मैं इसको जूम करता हूँ, देखता हूँ तो तक। अब देखिए, हैं तो बेटर होगा हम एकदम। मैं पॉइंट नंबर 3 से पढ़ रही हूँ क्योंकि वहीं से रेलेवेंट है। एलिजिबिलिटी मैडम फॉर। ऐसा ऐसा नहीं होता। आप जो है ना अपना ही दिमाग चलाते हो सर हम। बट ये है ना कि वो फास्टर होगा, इसमें वो अरे रिपीटिशन हो। फास्टर स्लोअर क्या यार, समझ सर में वो तो रिपीटिशन फास्टर हो रहा है, स्लोअर आप क्या हुआ। मैंने जब तक आप कर रहे थे ना रिव्यू कर लिया है, वो उसमें रिपीटिशन है कुछ। तो पॉइंट नंबर 3 से ही वो रेलेवेंट टेक्स्ट टेक्स्ट शुरू हो रहा है। एक मिनट मैडम, देखो सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही को समझ में आ रहा है दूसरे को नहीं समझ में आ रहा, एक बार शुरू से पढ़ लो, क्या 5 मिनट में फर्क पड़ता। एक बार पढ़ो शुरू से फोर्थ शेड्यूल, कोई फर्क नहीं पड़ता 5 मिनट में। देखो ऐसा है, सबको हमें साथ लेके चलना है। सर साथ लेके ही चल रही हूँ, बता रही हूँ पॉइंट नंबर 3 से पढ़ रही हूँ। बाकी चल, काजल काजल अवेलेबल है, काजल आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ।
प्लीज। हाँ, conversion from unlisted public company into limited liability partnership. Interpretation. In this schedule, unless the context otherwise requires, company means an unlisted public company. Convert in relation to a company converting into a limited liability partnership means a transfer of the property, assets, interests, rights, privileges, liabilities, obligations, and the undertaking of the company to the limited liability partnership in accordance with the provisions of this schedule. Listed company. Listed company means a listed company as defined in the Securities Exchange Board of India Disclosure and Investor Protection Guidelines 2000 issued by the Securities and Exchange Board of India under Section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act 1992, 15 of 1992. Unlisted public company means a company which is not a listed company. Conversion of company into a limited liability partnership. A company may convert into a limited liability partnership by complying with the requirements as to the conversion set out in this schedule. Upon such conversion, the company, its shareholders, the limited liability partnership into which the company has converted, and the partners of that limited liability partnership shall be bound by the provisions of the schedule that are applicable to them. Eligibility for conversion. A company may apply to convert into a limited liability partnership in accordance with the provisions of this schedule if and only if there is no security interest in its assets subsisting or in force at the time of application, and the partners of the limited liability partnership to which it converts comprise all the shareholders of the company and no one else. Statements to be filled. Statements to be filed. A company may apply to convert into a limited liability partnership by filing with the registrar a statement by all its shareholders in such form and manner to be accompanied by such fee as the central government may prescribe, containing the following particulars, namely the name and registration number of the company, the date on which the company was incorporated, and incorporation document and statement referred to in section 11. Registration of conversion. On receiving the documents referred to in paragraph 4, the registrar shall, subject to the provisions of this act and the rules made thereunder, register the documents and issue a certificate of registration in such form as the registrar may determine, stating that the limited liability partnership is on and from the date specified in the certificate registered under this act, provided that the limited liability partnership shall, within 15 days of the date of registration, inform the concerned registrar of companies with which it was registered under the provisions of the Companies Act 2013 about the conversion and of the particulars of the limited liability partnership in such form and manners as the central government may prescribe. Registrar may refuse to register. Nothing in this schedule shall be construed as to require the registrar to register any limited liability partnership if he is not satisfied with the particulars or information furnished under the provisions of this act. नेक्स्ट पेज नजर आ रहा होगा आपको? Yes, sir. यस सर। Provided that an appeal may be made before the tribunal in case of refusal of registration by the registrar. The registrar may, in any particular case, require the documents referred to in paragraph 4 to be verified in such manner as he considers fit. Effect of registration. On and from the date of registration specified in the certificate of registration issued under paragraph 5, there shall be a limited liability partnership by the name specified in the certificate of registration registered under this act. All tangible, movable, or immovable
and intangible property vested in the company, all assets, interests, rights, privileges, liabilities, obligations relating to the company and the whole of the undertaking of the company shall be transferred to and shall vest in the limited liability partnership without further assurance, act or deed, and the company shall be deemed to be dissolved and removed from the records of the registrar of companies. Registration in relation to property. If any property to which clause B of paragraph 7 applies is registered with any authority, the limited liability partnership shall, as soon as practicable after the date of registration, take all necessary steps as required by the relevant authority to notify the authority of the conversion and of the particulars of the limited liability partnership in such form and manner as the authority may determine. Pending proceedings. All proceedings by or against the company which are pending in any court or tribunal or before an authority on the date of registration may be continued, completed, and enforced by or against the limited liability partnership. Continuance of conviction, ruling, order, or judgment. Any conviction, ruling, order, or judgment of any court, tribunal, or other authority in favor of or against the company may be enforced by or against the limited liability partnership. Existing agreements. Every agreement to which the company was a party immediately before the date of registration, whether or not of such nature that the rights and liabilities thereunder could be assigned, shall have effect as from the date as if the limited liability partnership were a party to such an agreement instead of the company, and for any reference to the company there were substituted in respect of anything to be done on or after the date of registration a reference to the limited liability partnership. Existing contracts, etc. All deeds, contracts, schemes, bonds, agreements, applications, instruments, and arrangements subsisting immediately before the date of registration relating to the company or to which the company is a party shall continue in force on and after that date as if they relate to the limited liability partnership and shall be enforceable by or against the limited liability partnership as if the limited liability partnership were named therein or were a party thereto instead of the company. Continuance of employment. Every contract of employment to which paragraph 11 or paragraph 12 applies shall continue in force on or after the date of registration as if the limited liability partnership were the employer thereunder instead of the company. Existing appointment, authority, or power. Every appointment of the company in any role or capacity which is in force immediately before the date of registration shall take effect and operate from that date as if the limited liability partnership were appointed. Any authority or power conferred on the company which is in force immediately before the date of registration shall take effect and operate from that date as if it were conferred on the limited liability partnership. Application of paragraphs 7 to 14. The provisions of paragraphs 7 to 14, both inclusive, shall apply to any approval, permit, or license issued to the company under any other act which is in force immediately before the date of registration of the limited liability partnership, subject to the provisions of such other act under which such approval, permit, or license has been issued. Notice of conversion in correspondence. The limited liability partnership shall ensure that for a period of 12 months commencing not later than 14 days after the date of registration, every official correspondence of the limited liability partnership bears the following, namely, a statement that it was, as from the date of registration, converted from a company into a limited liability partnership, and the name and registration number of the company from which it was converted. Any limited liability partnership which contravenes the provisions of subparagraph 1 shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees, and with a further fine which shall not be less than 50,000
rupees, but which may extend to 500 rupees for every day after the first day after which the default continues. क्या रह गया कि अगर अपील फाइल करनी है तो अपील कितने दिन में फाइल करनी है। ये कह रहा है ना कि भाई आपने अपील फाइल करनी है, आपने अप्लाई किया कि भाई कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर दो, रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया। तो जब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया तो ये कहता है कि भाई आप अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा रूल्स में, तो आपको एलएलपी रूल्स भी पढ़ने हैं इसके साथ में। अब एलएलपी रूल्स में क्या है, एलएलपी रूल्स में भी अमेंडमेंट हुई है टाइम टू टाइम, तो वो भी है, एक बार आप देख लीजिएगा। होता क्या है, देखो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। बेसिक आइडिया क्या है कि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको आपको खुद डिसाइड करना है कितना पढ़ना है। अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप ये नहीं कह सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं। लेकिन कम से कम वो जो पीपीटी पहले दी है उतना तो आपको जरूर पढ़ के जाना है, उतना तो आपको याद होना चाहिए, और नॉर्मली क्वेश्चंस उसमें से ही पूछे जाए। ठीक है जी, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं।